So, very warm welcome to all the people, all the students here. Now, very good question which was again taken up in the class. Just see what the question says. When a polynomial is divided by x minus 1, the remainder is 1. And when it is divided by x plus 1, the remainder is minus 1. Find the remainder when it is divided by x minus 1 into x plus 1. It's a very good question. एंड अगर आप इस सवाल को अगर देखें और इन जनरल एक्सटेम्पोर एक स्टूडेंट से पूछें क्या होना चाहिए, you get very interesting responses from the students. Many times they do not know the very basic of what this particular question is actually asking for. Let's start off with the basic. This is starting with basics. Basics का क्या मतलब हुआ? जब छोटी छोटी बातें समझने की कोशिश करते हैं, बहुत बिल्कुल बेसिक चीज, बिल्कुल बेसिक क्या? Let us say we divide 13 by 5. All right, 5 2s are 10. All right, and the remainder is 3. Okay, so what we see here is that there is a remainder. Definitely there is a quotient and there is a divisor. अब ध्यान से देखिएगा, रिमाइंडर शुड ऑलवेज बी लेस देन द डिवाइजर. मतलब क्या हुआ? R should always be less than the divisor. Let us say G. This is the divisor. Okay. What exactly the values this remainder can take? Answer: R can be, let's suppose there is another number 10. We divide it by 5. 10. We divide by 5. 2s are 10, and the remainder is 0. So the remainder can be, the values which it can take is 0, definitely 1, 2, 3, and 4. It cannot even touch 5. It cannot. Basic बातें हुई simple. इसका मतलब रिमाइंडर हमेशा किससे छोटा होना चाहिए? रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा होना चाहिए. इस तरह से ही अगर किसी पॉलिनोमियल को, let us say we divide a polynomial with another polynomial, let us say it is gx, there will be some quotient qx, and then there will be some remainder rx. This remainder can be 0, that's not a problem. Can be, जैसे यहाँ पर हमने देखा 0. लेकिन हम क्वेश्चन किया अपने आप से कि what should be the relation between the divisor and the remainder? Answer rx, remainder की degree of rx, degree, degree of rx should be less than degree of gx. What does this mean? इसका मतलब ये हुआ, suppose we have got a polynomial, say x cube plus 4x square plus 3x plus 1, and we divide by something like x square plus 1. What is the degree of this particular polynomial, which is the divisor? The divisor की degree है 2. Degree of divisor. Without hesitation, we can say the remainder should be of the degree less than 2. So what is exactly less than 2? Answer is 1. Or can even be a degree 0. It can be constant. So what all things which this particular remainder can take? The remainder should be of the form, answer है ax plus b. यहाँ पर a और b दोनों के दोनों को पता करना ही हमारा काम है. A can be 0, no problem. B can also be 0, that's not a problem. But the thing is that x cannot have a degree more than 1. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने किसी पर्टिकुलर डिवाइजर से किसी पर्टिकुलर डिविडेंड को डिवाइड किया, तो degree of the polynomial will always be less than the degree of divisor. So degree of divisor for any kind of dividend
would either be 0 or 1. 2 नहीं हो सकती बस। बहुत बढ़िया। अब जरा इस सवाल को देखते हैं। Now, once we get to this particular question, this question which it says is that divisor is equals to dividend is equals to divisor into quotient plus remainder. ये चीज तो हमारे को समझ में आ गई बात। तो हम लोग अपने आप से सवाल करते हैं और एक जैसे बोलना चाहिए कि एक नॉन इंट्यूटिव मतलब सीधे आंसर क्वेश्चन अपने आप से पूछे कि वैसे अगर हम लोग डिवाइड करते किसी पॉलिनोमियल को इससे x-1 से कुछ ना कुछ तो क्वेश्चन आया होता, बिल्कुल आया होता साहब, क्यों नहीं आया? और कुछ रिमाइंडर आया होता। इस केस में रिमाइंडर कितना दे रखा है जल्दी से देखिए 1 यहाँ पर। और याद कीजिएगा x-1 में 1 ही रिमाइंडर आ सकता है क्योंकि x की डिग्री 1 है तो 1 से छोटी डिग्री 0 होती है। ये आंसर आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। Similarly, again same polynomial is divided by x plus 1. We will get a different quotient, no doubt about it. That's a new quotient. But the remainder will be -1. Check out there. So these two things are given. So we must know as to what is the divisibility method. This is the divisibility method which we are talking about. To find, and we are using a blue pen here to find when px is divided by x plus 1 into x minus 1. There should be another type of quotient that's not again non-negotiable, plus some remainder. REMAINDER. Now, अगर आप जनरली इतनी बात बोलने के बाद में स्टूडेंट से पूछेंगे तो वेरी हिलेरियस थिंग्स विल कम। एक स्टूडेंट को जो हमने क्लास में देखा, some might say that the answer is 0 or some any number. They forget. x plus 1 into x minus 1 का मतलब क्या हुआ? जल्दी से देखिए। x plus 1 into x minus 1 का मतलब है x square minus 1. What is the degree of this particular polynomial, which is the divisor? The answer is 2. So the remainder should be, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं our remainder should be of the form ax plus b. So यहाँ पर रिमाइंडर आएगा। आपने कहा अब इसमें क्या मतलब हुआ? आंसर है ये कि x की डिग्री 1 है, तो अगर डिवाइजर 2 है तो रिमाइंडर शुड बी ऑफ द फॉर्म ax plus b. And what we need to find? We need to find a and b. To find a and b in order to complete this particular part. Okay, very true. Now what we should do? Very simple. Now when हम लोग यहाँ पर देखिए, जरा गौर से देखिए, यहाँ पर पॉलिनोमियल को जब मैंने x minus 1 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर थ्योरम लगाते हैं। रिमाइंडर थ्योरम, x minus 1 is equal to 0 किया, x की वैल्यू क्या आ गई जल्दी बताएं? 1. Therefore p1 is equals to, यहाँ पर 1 रखिए, 1 minus 1 0, 0 into anything is 0 plus 1, p1 is equals to 1. एंड ध्यान से देखिएगा x plus 1 is equal to 0 रखेंगे, x की वैल्यू क्या आ गई जल्दी देखिए, x की वैल्यू आ गई -1. तो p ब्रैकेट में -1 चेक करिए, यहाँ पर -1 रखा, -1 plus 1 0. So polynomial, the value of the polynomial becomes equals to -1. Do the same thing over here. See, I substitute 1. So we say p1, which we already know is 1, is equals to 1 plus 1, 2, 1 minus 1, 0, 0 into some quotient, which again will become 0. This part will always become 0 because we are inserting the value 1 over here. Plus, put x is equals to 1, a into 1 plus b. क्योंकि हमने यहाँ पर x is equals to 1 रखा था। चलिए, तो क्या 1 is equals to ax plus b के बराबर हो गया? अब मैं फिर से एक बार देखते हैं इसका मतलब क्या हुआ।
यहाँ पर हमने कहा when x is equals to 1 क्यों लिया हमने? हमें पता है p1 is equals to 1 given, एक तरह से तो ये शुरुआत से ही given है। हाँ जी बिल्कुल। और p minus 1 is equals to -1 बिल्कुल। तो यहाँ पर भी पुट करते हैं यही चीज। बताइए 1 पुट करेंगे तो ये तो चीज 1 minus 1 तो 0 होती है। तो p1 is equals to 1, therefore 1 will be equals to ax plus b, where x is equals to 1, so a into 1 plus b. Similarly p minus 1 किसके बराबर है? -1. Again यहाँ पर -1 पुट कीजिए, -1 plus 1 0, 0 into anything is 0, 0 plus a into -1 plus b. So here comes the result, -1 is equals to -a plus b. So these are the two things which we wanted to know. This is a, let us say this is equation number 1, and let us say this is equation number 2. Now what we should do? Simply add these two equations. Add them. -1, a into 1 is a only. It's not a into x, a only. And this is a plus b. A plus b is equals to 2. Add them. 1 plus 2 will give us 0 is equals to 2b. This means b is equals to 0. And in case b is 0, hence substituting in 1, we find 1 is equals to a plus 0. This means a is equals to 1. What we wanted to find out? The remainder. Therefore, and finally, the end game. हम लोग एक black pen ले लेते हैं. Hence, remainder Rx, which was ax plus b, in this case will be equals to a की जगह पे आप रखेंगे 1 into x plus 0, which will finally give us x. So this is actually the answer for this particular question. So answer is x. This is what we wanted to find out. So this is the way, and in case you want to check out, you can even think about a particular value of a particular polynomial. I'll give you that particular polynomial. देखिए बहुत आसान हो जाएगा। क्या ये हमारे पास अगर polynomial होता, if a polynomial here, now this is just to show the students why this answer is correct, is x square minus 1 और रिमाइंडर हम लोगों के पास आया था x. चेक करिएगा, एक सिंपल पॉलिनोमियल है, q डबल प्राइम की वैल्यू अगर 1 ले ले तो x स्क्वायर माइनस 1 और ax प्लस b में x की वैल्यू हमारे पास x तो x ही रहेगा, a की वैल्यू 1 आई थी, b की वैल्यू 0 आई थी. ये एक पॉलिनोमियल ले लिया. If we take this particular polynomial, which it actually translates to x square plus x minus 1. Now in case we divide this polynomial, long division, x square plus x minus 1, we divide it by x plus 1. First of all, let's divide it by x minus 1. So this is x, this will be x square minus x minus plus, this will cancel because of this answer will be this, answer will be plus 2, that is 2x minus 2 minus, this is minus, this is plus. Check out what is the remainder. Remainder. Wonderful, very good. Now साहब बहुत अच्छा लगा. एक और चीज कर लेते हैं. क्या? इसी चीज को x plus 1 से डिवाइड करते हैं. क्या आएगा ऊपर? x. x square plus x. Now we subtract it. Minus minus, this will cancel, and minus 1 is the remainder. Oh yes. Now the final point comes. If this is x square plus x minus 1 divided by x square minus 1, क्योंकि हमने x plus 1 into x minus 1 से divide किया. So again 1 x square minus 1 minus, this is plus, this will cancel, and out pops the remainder x. Just to show you as to why this will be correct. So इस तरह के हम दो सवाल और करेंगे. एक सवाल करेंगे, एक सवाल आप लोगों को काम के लिए दिया जाएगा, और देखिए आपको बहुत मजा आने वाला है.